तो भाई टेंपल से वापस आते हुए ना मुझे एक और जगह मिल गई यार। ये तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं था। बाकी मैं रिसर्च करके सारा डाल दूँगा। ये देखो आपको पीछे दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सी क्लिफ है। तो मैं तो वापस जा रहा था टेंपल से और ये मुझे दिख गया, और है तो छोटा सा बट काफ़ी ब्यूटीफुल है। मैंने कहा चलो आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं, और इसका नाम प्राइस वगैरह मैं एज़ यूजुअल डाल ही दूँगा। अभी आपको दिखाते हैं यार बैक कैमरा से, ठीक है। अच्छी जगह यार, पूरे टाउन का यहाँ से व्यू दिखता है आपको, बट अभी थोड़ा सा मिस्टी सा है तो प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहा। तो यार फैमिली वगैरह के लिए तो, और इवन कपल्स, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। पीछे पूरा सिटी दिख रहा है यार। हाँ, तो काफ़ी इंस्टाग्रामेबल जगह ये। जगह जगह पे फ़ोटोज़ के लिए बनाए हुए हैं इन्होंने, तो सही है भाई। अगर आप में से कोई जो भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे आना चाहें तो उसका नाम वगैरह मैं सारा डाल दूँगा, और काफ़ी चीप है यार, प्राइस भी मैं डाल दूँगा। वैसे शाम को आने का फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे वो सनसेट टेंपल जो मैंने अभी दिखाई है वो भी आपको दिख जाएगी, और इस स्पॉट पे भी आ सकते हैं। ये एक दूसरे से सिर्फ 500 मीटर्स दूर हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो सही रहेगा सनसेट के लिए, बहुत बढ़िया। तो दैट्स इट यार। अभी तो अंधेरा हो रहा है और आगे मुझे इतना कुछ खास दिख नहीं रहा, ऐसा कि चलिए देख ही लेते हैं। बट वो आपको सिटी दिख रही है यार, पूरा योगा करता सिटी दिखता है यहाँ से, क्या बात है। The next morning. गुड मॉर्निंग भाई लोग, ये रहा अपना स्कूटर, और आज मैं जा रहा हूँ यार बोरोबुदुर टेम्पल। बोरोबुदुर टेम्पल आपको कल भी बताया था कि दुनिया के 7 वंडर्स में था, पता नहीं अभी भी है, आई थिंक था। तो मैं ना एक चीज़ करता हूँ, मतलब यूजुअली हमेशा जब भी मैं ट्रैवल वगैरह कर रहा होता हूँ, तो जैसे कि हम लोग ट्रैवल करते हुए थोड़े से डरते हैं कि भाई इंडोनेशिया में कहते हैं बाली बैली एंड स्टफ लाइक दैट, कि अगर आप खाना कहीं बाहर खा लेते हो तो बीमार हो जाओगे। यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, खासकर अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं। अभी देखिए ये मेरे पीछे है, बिल्कुल रोड साइड स्टॉल है मेन रोड पे, और मैंने अभी यहाँ पे खाना ऑर्डर किया है, और ऐसी जगह पे मैं कभी कभी खाता भी हूँ जब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और भाई मैं अभी तक बीमार नहीं हुआ हूँ, मतलब मेरी पूरी हार्डकोर एडवाइस भी मत लेना इस पर। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा तगड़े बजट पे हो तो ऐसे स्टॉल्स पे सही खाना मिल जाता है भाई, और वेजिटेरियन खाना भी मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ 10,000 रुपया, मतलब 50 रुपये में मुझे क्या खाना मिल रहा है यहाँ पे खाने को।
तो यह भाई का स्टॉल, और खाना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 10,000 में मुझे ये सब मिल गया, और मतलब यार टोटल 17,000 में मुझे ये सारा मिल गया। तो अनबीटेबल वैल्यू है भाई ऐसे खाने की, और हाइजीनिक होता है, ऐसी कोई बात नहीं, आप बीमार नहीं होगे, मतलब मैं तो नहीं हुआ यार। तो दैट्स इट, मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता था, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ 1 हफ़्ता है यहाँ पे, और मुझे 2 महीने हो गए इंडोनेशिया में। तो उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो दैट्स इट, बाकी आपको टेंपल दिखाते हैं थोड़ी देर में, खाना खाने के बाद। 1 hour later. भाई पहुँच गए हैं बोरोबुडुर टेंपल। तो अभी मैंने स्कूटर पार्क किया है, और बस यहाँ पे पैसे वैसे दे के फिर निकलते हैं एक्चुअल टेंपल की तरफ। Namanya tambah lagi Kak, di dalam nanti nggak ada yang jual sini. Halo. Halo, selamat siang. Siang. Sampai atas seandainya, karena nanti untuk harga tiketnya berbeda. Silakan lurus depan, pilih terus kanan lagi. Okay. Can use Yeah. this one. Thank you. And please wait in the waiting room. Okay, thank you very much. The QR, the access to Nirvana. Second, you must be guided by someone. It's me. I'm your guide. Okay. Will lead you the tour, explain a lot of things, and also will be watching you. If you do vandalism. Because this temple, vandalism. Number 3, we have to use the sleeper. Sleeper is provided by the stakeholder here to reduce the deterioration of the stone from many steps done by the visitor. Lot deteriorated. That's why to reduce we use the sleeper. Recommendation from the expert of UNESCO. Then rule number 1, not allowed to sit on the part of the stupa. Stupa has many parts. First part, second part. So not allowed to sit on the part of the stupa, not stand on the part of the stupa, not climb the stupa and touch the Buddha state inside. Because people see the Buddha inside curious. Like, oh, what inside? Just step up. Then number 2, not allowed to lean on the carving wall. Especially when you're sweaty. It will also accelerate the deterioration of the carving. Okay? Some other discipline, I will explain you that. Okay. And later, you're not allowed to split from the group from the beginning till the end of the tour until I can say dismiss. Then you can go by yourself. Okay. And while tours take around, because I will give you also special time to explore the temple by yourself, couple minutes for exploring the temple for photography. Okay, now we go to the fitting place where we choose the size of the sleeper. Next, Every boyfriend's like. this is the fitting room. After fitting, proper and in the back we will use everyone from England? Netherlands and others? Scotland, England. Scotland or no? He's American. US. I'm See, but the length though. This is okay? The length is that's good. Okay. तो भाई ये वाली ना चप्पलें डालनी होती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कहते हैं कि टेंपल का जो फ्लोर है वो डिटेरिएट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप अपने शूज़ नहीं ले जा सकते। तो अभी हमको ये डलवाई हैं, तो ये डालनी होती है यहाँ पे। तो भाई जो टिकट है इस टेंपल का, वो उसके 2 प्राइजेज़ हैं। एक तो है 360,000 रुपया, 3.5 लाख से ऊपर थोड़ा सा। तो बट उसमें आप टेंपल के ऊपर नहीं जा सकते, पता नहीं अंदर नहीं जा सकते, कुछ ऐसा बोल रहे थे। अगर अंदर जाना तो 4.5 लाख की है भाई, मतलब 75,000 एक्स्ट्रा। तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे आए हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो
थोड़े से पैसों के लिए क्यों, और अगर आपको दिखाना ही है तो प्रॉपर्ली दिखाएंगे। तो मैंने तो वही लिया 4.5 लाख रुपया वाली, जो आई थिंक इंडियन करेंसी में 2500-2600 रुपये बनते हैं। तो वैसे तो बहुत ही एक्सपेंसिव अट्रैक्शन है ये। अब तक जितना मैं घूमा हूँ किसी एक सर्टेन अट्रैक्शन के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगे, बट एनीवे बाकी आके देखते हैं। The information center. Because we have the archaeological park around the temple here, 85 hectares. And the temple in the middle of the park. Yeah, so we walk from here to the temple 300 meters. After 300 meters, then we climb the hill, then we climb the temple. Nice. That's why the name of the temple consists of the word of Sanskrit. Vihara or Biara, that means monument or temple. And Budur, that means hill or small mountain. So Vihara Budur mean monument on the hill or temple on the hill. Because the adaptation of our local people, they spell and pronunciate very short and easy for them. Borobudur. And now become Borobudur. Monument on the hill. So the temple stands on the natural hill 270 meters above sea level. Borobudur is the World Cultural Heritage of UNESCO since 1991. Number 592 after the World Cultural Heritage of other countries. And Borobudur is the single biggest Buddhist temple in the world. Wow. Oh, wow. Yes. Many people compare with Angkor, Cambodia, but Angkor is the largest temple complex in the world. And that's also Hindu. Yeah. It's not, And in one complex, many temples, but this is single biggest in the world because this temple covers 15,000 square meters. Wow. 1.5 hectare area only the building of Borobudur. Yeah. And this temple built of 2 million blocks volcanic stone. Wow. The people call andesite, a lava stone taken from the quarries 3 until 5 kilometers from here. But the quarry came from the stream of the Merapi volcano, the lava stream. So this is typical lava stone. And the volcano is 30 kilometers from here. The still active volcano. This temple, Merapi. This temple was built by Buddhists. This temple was built by the Buddhist dynasty in the 8th century. So far, the temple is 1,250 years old because it was built in 780 by the Buddhist kingdom. Wow. And the people took 4 generations to build Borobudur. When one generation ruled the country, ruled the kingdom, every 15 or 20 years, then it was 70 years to 80 years to build Borobudur. 4 generations. But even not totally finished. Because some of the artwork of the temple remain unfinished left. Like 2 Buddha statues remain unfinished left. Many gargoyle or to drain it water remain unfinished left. Many lion statues remain unfinished left. Because before they finish, there was dispute between Buddhists and Hindus empire. In the dispute in the 10th century, the dispute took place. One of the Buddhist successors conquered by Hindus. So then he moved from here to Sumatra. And in Sumatra, he was promoted to become a new Buddhist king in Sumatra. Like special coronation in Sumatra. After 15 and 20 years become very prosperous, a lot of Buddhist people move from here to Sumatra and some other to East Java, they follow Hindus. That is the reason why this temple in the 10th century totally abandoned by Buddhists. After the temple not being cared by many people, then many eruptions of Merapi volcano, also the big earthquake in the year 1006, it's like 1,000 years ago, destroyed Borobudur. This temple collapsed, the ash of the eruption covered the temple many times, then finally grew a lot of tropical plants. And the temple in a tropical country, that's why it grew very fertile, very fast. And the root of the big tree on the temple penetrate into the wall, into the soil. Then finally, make some of the wall decay and collapse. Many Buddha statues fallen, then covered in the ground. 800 years. From 10th to 18th century, like the old one in Italy, Pompeii. But then the temple here was rediscovered. Yeah, it was rediscovered in 1814 by the British men. The same person who discovered Singapore, Thomas Stamford Raffles. He need 4 years. He need 5 months. To clean the temple from everything, excavation. But in 1814, no documentation because I believe no photograph technique. Some people drawing only. But when the British got from Indonesia to Singapore, then kept the Dutch authority in Indonesia. The first restoration of the temple took place 100 years after rediscovery. That means 1907 to 1911. And the first restoration by the Dutch took place only the top level of Borobudur. See, the temple has two different forms. The lower terrace is 6
level square form. And then on the top, 3 circular terraces. The first restoration took place only the top. There are 73 stupa. S-T-U-P-A, stupa, the bell form. This is the very iconic building in Buddhism. Because stupa represent the perfect struggle of someone or Buddha to achieve the enlightenment. From the enlightenment got the wisdom, from the wisdom got happiness or tranquility. The people call nirvana. Yeah, happiness in the life. Yeah, so 73 stupa. And all them ruined. Then I show you the documentation and the display behind that. Look. This came in 1814 and this is 1907. The Dutch found some stupa ruined and collapsed. Some of them stood on completely, even the condition not very well, like winding, like a decay. Yeah, but at least it could be a guidance. Micro, small. Cosmos means universe. So whole temple here for Buddhism is small universe. So that's why this temple is divided into 3 parts of life. Lowest, the bottom here, telling about karma. Karma is the teaching or the basic law, the teaching of cause and effect, action and reaction of human. Whatever the human have done in life, they will receive the consequence. Oh, I know that. Are you doing good karma? I think so. Whatever the consequence, you have to receive for the aspect of life. Because they don't want to be reborn as monkey. They don't want to be reborn as as a fox, something like that. And the second part from here, for level, represent the way or the process of spiritual, how to renunciate bad karma, how to describe the happiness of life. It's like on the space that you are so happy, but you will be able to see the world round. That's why this is integrated cultural landscape. You will see beautiful thing, you will be happy, but you cannot describe how you can always keep the happiness. This is the utmost. That's why people call nirvana the end of the suffering, or the path of pala. And there are 73 altogether, and every stupa, one Buddha statue inside. Only 2 stupa empty. The big one here in Museum Borobudur, as I told you, unfinished Buddha, and the small one next to here, one stupa empty, sitting in a display of the collection Museum of London. Yeah, this means Buddha has permanent residence. Yeah. Yeah. तो भाई इस पैकेज में गाइड भी मिला है और वो सारा कुछ बता रहा है कि क्या क्या सीन है। वो सामने आपको टेंपल दिखना शुरू हो गया होगा, मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। If you remember the song from Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Stairway to Heaven too narrow, too small, and this is the highway to heaven, or boulevard to heaven. The boulevard to nirvana. So that you buy more. These are really nice art, like, Scandal. you know, What was still to preach the You know what I mean? So that you would know about nature. yeah. Provided for us to change the sleeper right now. Yes. Yes. Is that on the edge? Let's do America there too. When it's flooding my city almost.
English, Alman, Indonesia, Bahasa. And then we were the only one in the restaurant, and they had like music. because the blue seal here attached here is the result of the convention of the World Cultural Heritage in Den Haag, Amsterdam, Den Haag, Netherlands, 1951. So this blue seal issued to protect the temple from many kind of the civil conflict. From the war, from the battle, so the temple protected from the convention of World Cultural Heritage. So that's why the blue seal is very simple, very simple. Yes, not destroyed. Okay. Otherwise you will be charged, yeah, by It's leather. So is that? yeah, but you need Yeah. Yes, it is. Got a weird word. तो यार ये टैग है आगे आने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, अदरवाइज ऊपर नहीं आने देते टेंपल के। Let's go. Mau duluan enggak apa-apa. Ini, oh ya ini. Iya ada. Apalagi ya. Tapi kalau mau langsung भाई ये 8th सेंचुरी का बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, आपको दिख ही रहा होगा। क्वाइट सिमिलर है जैसे आपने इंडियन टेंपल्स होती हैं या फिर थाई टेंपल्स होती हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर होता है, तो काफ़ी सिमिलर है उससे, जैसे आप देख ही रहे हैं। ब्यूटीफुल। Okay, guys, come and plant the tree to expect good fruit from the tree. Planting the tree of karma. But on this level, we have 4 different stories. The first important one is the outline here, all the way around, 120 panels, telling the life story of the Buddha. The autobiography of the present Buddha. Because the Buddha we know today is the man from India, Siddhartha Gautama. He is the founder of the Buddhism, the top leading Buddhist spiritual today. And he has been leading the spiritual Buddhism, yeah, 2646. Another 2400, then he will still leading this Buddhism. Because in one Buddha will be leading the spiritual in the world at least 5,000 years. The Buddha we know today, Siddhartha Gautama, is the Buddha number 4. There were already 3 previous Buddha before him. And those 3 previous Buddha we call practice Buddha or pratikya Buddha. Those the profile. 1, 2, 3. They have been in the life here. They have been previous and they have taught Buddhism before Siddhartha Gautama. Yeah? And after 5,000 Siddhartha Gautama leading the spiritual Buddhism, then the world be ended. The civilization will be ended. Maybe no more wisdom. Maybe no more, tolerance. No more good thing. Then the world ended and came the next Buddha to lead the world. The future Buddha. Maitreya. So, silakan. Thank you. Talents. Like a lot of things that's a concern to the good thing. But this is singular. The plural of Bodhi is then Buddha. So Buddha means accumulation, a lot of comprehensive wisdom of life. So we call the spiritual of Buddha is a plural because it can embody in life into many different forms. Yeah. So today the body of Siddhartha Gautama is still being used by the supreme wisdom, to teach the wisdom to other people. So the body of Siddhartha Gautama is only mediator, is only transformator to teach the wisdom to other people, because not everyone able to get the wisdom by himself. So the teacher, the body is required. It's like 2 elements. The physical is story Buddha before Buddha was born. When the Holy Spirit is still in heaven, of Tusita, then I tell you the important thing here. Because this temple is totally more than 2,640 panel relief.
One panel, one story, other panel, other story. But from 2640, if I explain one panel in 1 minute, so 1 minute time 2000, yes, 460. But once upon a time, the Queen Maya is the beautiful girl, beautiful lady. She would be the parent, she would be the mother of the Buddha in a life, in a reality. Yeah, she was sleeping inside the palace, and she was dreaming. On a dream that she was kidnapped by 4 kings, and those 4 kings brought her into the Silver Mountain, and the Silver Mountain is indicated the top of Himalaya as a Meru. Meru is the summit of Himalaya. It's the place where a lot of wise gods living. There it is. This is when the royal couple. This is when the royal couple, the queen and the king, explain the dream, and finally, some of the Hindu priests, the Brahmana, explained to them that soon, and from her pregnancy, that Queen Maya would be soon to get a son, a child, that the son would be the greater king. Not, but also the fruit, lots of jewelry here, give her a present. So, and afterward, soon Queen Maya got pregnant. Share the charity, the alms to people. And Queen Maya teaching the wisdom to many people, even Brahmana, they listen to the teaching from the Queen Maya. Because like the supernatural power from the Buddha inside, the embryo of the Buddha shall last in the mirror. And time to time, now the pregnancy is 1 year, not 9 months. 1 year pregnancy. And Queen Maya was about to give birth of the son. But then according to the Hindu tradition, when the prince, the queen pregnant, and she would like to give birth of the son. Oh, in Malaysia is earlier. But here in the 4th of June. Yeah, they did a big parade. But Maybe different perspective to choose the moment. So this is on the halfway. Then Queen Maya found a very beautiful garden. The garden is about like 300 kilometers south of Kathmandu, now belong to Nepal. But 2000 years ago, it was belong to India, North India. So the park is Lumbini, Lumbini Park. You can assume because Lumbini has become the historical site for the Buddhist pilgrim. That is the place where Buddha was born. 7 days later, all the members of the royal family, they come. They respect, and finally, the baby got his name. He was called Siddhartha. And Siddhartha means he has fulfilled his destiny. Siddhartha means, all wish come true. Every wish come true. Siddhartha. This is the name. This is the name of the little baby when the Siddhartha was born, named Siddhartha. Because when he grew up, 29 years old, he left the palace. He practiced ascetic life, then he got his spiritual name, people call him Sakyamuni. भाई ये मत समझिएगा कि ये गाइड दिखाई जा रहा है, बट द थिंग इज़ भाई जितना इन लोगों को पता है, मैं जितनी मर्जी विकीपीडिया पे गूगल पे सर्च मार लूँ, मैं उतना नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसपास का सारा आर्किटेक्चर भी दिखा दूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। you know my middle name means और भाई ये है रेस्ट ऑफ द टेम्पल। यहाँ पे बेसिकली स्टूपाज ही हैं, जैसे राउंड है ये,
और बस गोल गोल घूम रहा है भाई। और आपको बताया ही है हर स्टूपा में बुद्ध हैं, और दैट्स प्रीटी मच इट। एक दो स्टूपा वो जो गाइड था बता रहा था कि तोड़ दिए गए थे, और वहाँ पे जैसे अभी ये आपको सामने दिख रहा है कि जो बुद्ध हैं वो एक्सपोज हैं, मतलब आप देख सकते हो। तो ये है भाई ऐसा। तो ये जो आपको सारे दिख रहे हैं इनके बीच में ऐसा ही है। और ये जो एरिया है आपको दिख रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल एक हिल है, उसके आसपास है ये सारा एरिया। तो बहुत प्लेजेंट है यार, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा। ये देखिए ये नीचे सीधी एंट्रेंस जाती है, बट जिन लोगों के पास स्पेशल टिकट है अपेरेंटली वही लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एरिया है यार, पीसफुल है, एक्सपेंसिव है। तो अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हो टाइट बजट पे तो आप इसको प्रॉबली स्किप कर सकते हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बहुत से और अट्रैक्शंस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो इन पैसों में आप कर लेंगे। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो यार, आपकी मर्ज़ी है। बट अगर मनी का कोई टेंशन नहीं है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आइए। बाकी और कुछ डिटेल्स स्किप होंगी मैं डेफ़िनेटली एज़ यूजुअल जैसे मैं डालता हूँ वो डाल दूँगा। और हाईली रिकमेंड करूँगा भाई, बेसिस कि ये कितना ब्यूटीफुल जगह है। चाहे आप सोलो ट्रैवलर हैं, चाहे आप फैमिली के साथ हैं, या फिर आप कपल हैं, हाईली रिकमेंडेड। तो लास्ट फ्लोर है वो भी अभी आपको दिखा देते हैं ऊपर चल के। तो ये लास्ट फ्लोर है भाई, इसके ऊपर ये बिग स्तूप है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो भाई इसी के साथ ही ये एंड है योगा करता सीरीज़ का, क्योंकि अभी आज मैं निकल जाऊंगा, शाम को मेरी ट्रेन है जकार्ता की, और आपको इंडोनेशिया की ट्रेन्स भी दिखाएंगे कि कैसी हैं। और दैट्स अबाउट इट। तो इसके बाद अभी आपको ट्रेन में मिलते हैं यार। सनराइज़ हो रहा है बहुत ब्यूटीफुल सा, सॉरी सनसेट सही है भाई, चलिए। तो भाई मैं अभी वापस जा रहा था इस टेंपल से। तो यहाँ पे छोटा सा ज़ू भी है यार, ये देखिए हाथी वगैरह हैं और एनिमल्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली यार मेरी है बस, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो मैं तो निकलने वाला हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारा एक्सप्लोर कर पाऊँ। टेंपल वैसे बहुत बड़ा है, मतलब मेन टेंपल तो वही है यार, बाकी गार्डन वगैरह है और ज़ू है यहाँ पे। तो दैट्स इट। मुझे तो भी जाना पड़ेगा क्योंकि 2.5 घंटे में मेरी ट्रेन है, और 1-1.25 घंटा तो मुझे वापस योगा करता पहुँचने में लगेगा, और उसके बाद फिर मैंने ट्रेन स्टेशन जाना है। तो मेरा स्केड्यूल तो बहुत टाइट है यार। बट हाँ, मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ज़ू वगैरह भी है। सो जो भी आप मनी पे कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, उसमें और चीज़ें थोड़ी बहुत इंक्लूडेड हैं। Rp20.000, 350 kasih 600. Yang daster-dasternya buat oleh-olehnya. ये भाई सोवेनियर मार्केट है। जब यहाँ से बाहर जा रहे हैं टेंपल से तो रास्ते में ये है, काफ़ी बड़ी है वैसे। मेनली यहाँ पे कपड़े वपड़े दिख रहे हैं, सोवेनियर टाइप। वैसे हम मतलब मैं यार लास्ट टूरिस्ट में से जो मेरा ग्रुप है एक है यहाँ से निकलते हुए, तो काफ़ी बंद भी हो चुका है यहाँ पे मार्केट। क्लोथिंग ही है मोस्टली यार। हेलो बातें हेलो। इसकी फ़ोटोज़ वगैरह छपी हुई हैं टेंपल की। तो बाकी वही सिमिलर स्टफ़, की रिंग्स हो गए, ऐसी चीज़ें।
berapa? Cantik 10.000. Ya 1.000 mari 1.000-an 1.000-an. 25 26. भाई बहुत बढ़िया। ये तो सारी का वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आधी बंद हुई है और आधी में वही रिपीटेटिव सी चीज़ें हैं यार, वही सोवेनियर्स। तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। Hello. तो 300,000.